नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा हिंदू के ऊपर। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू तीस्ता टिल गुजरात हाई कोर्ट टेक्स अप पेटिशन। अब इंटरिम बेल क्या होती है? इट इज ग्रांटेड फॉर अ टेम्परेरी एंड शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट टिल द एप्लीकेशन सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article, we have to know what is bail and types of bail in India. Both the points are covered on our website. इसका link available है description में. Our next important headline is Vikrant is a reflection of self-reliant India, says Prime Minister. ये available है पेज नंबर 1 पे और ये related है पेपर 3 डिफेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट पे भी कवर किया है और कल इसको यूट्यूब पे भी डाला गया है, तो आप विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर हम ओवरव्यू देखें इसका तो इट हैज अराउंड 2300 कंपार्टमेंट्स, मैक्सिमम स्पीड इज 28 नॉट्स, क्रूजिंग स्पीड इज 18 नॉट्स एंड एंड्योरेंस 7500 नॉटिकल माइल्स है इसकी। ठीक है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एन एयर विंग कंसिस्टिंग ऑफ 30 एयरक्राफ्ट कंप्राइजिंग MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव 31 एंड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। Our next important headline is the NPT is beginning to look shaky. ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। इस आर्टिकल में हमें जानना है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, इसकी सक्सेस क्या रही और वीकनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें, NPT was negotiated during the 1960s to reconcile 3 competing objectives. These are controlling the further spread of nuclear weapons beyond the P5 countries. कौन सी P5 countries? US, former USSR, UK, France and China that had already tested. Other objective is committing to negotiating reductions of nuclear arsenals leading to their elimination and sharing benefits of peaceful application of nuclear science and technology. Our next important headline is India's cyber infrastructure needs more than patches. ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइबर क्राइम से। In this article, we have to know why has there been a steady spike in cases of cyber crime, issues linked to it, what steps are taken by government of India in this context, and what more needs to be done. It has been noted in India, cyber crime is increasing with the increased use of information and communication technology. However, despite this alarming trend, capacity of the enforcement agencies to investigate cyber crime remains limited. इस एडिटोरियल में कुछ इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं। कौन से हैं वो? फर्स्ट इज there is no separate procedural code for investigation of cyber or computer related offenses. There is shortage of technical staff. It has been noted that there have been half-hearted efforts by the state to recruit technical staff for the investigation of cyber crime. In this context, therefore, it is essential that state governments build up sufficient capacity to deal with cybercrime. The cyber forensic laboratories of the state must be upgraded with the advent of new technologies, and data localization must feature in the proposed personal data protection law so that enforcement agencies are able to get timely access to data of suspected Indian citizens. Our next important headline is journalist activists continue to be targeted in J&K. Amnesty. ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया and recent findings of Amnesty International in this context. So recently, Amnesty International had recorded at least 60 instances of crackdown on journalists and human rights defenders in Jammu and Kashmir since the revocation of special status in August 2019. अगर हम freedom of speech and expression की बात करें तो it is protected as a fundamental right in the Constitution of India under Article 19(1)(a), which states that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. And Article 19(2) जो है, it puts reasonable restrictions. Our next important headline is Navy's ensign pays tribute to Shivaji. ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस से। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन नेवी अडॉप्टेड अ न्यू एनसाइन इंस्पायर्ड बाय सील ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी। इस आर्टिकल में हमें जानना है न्यू एनसाइन के बारे में। इसको हमने बहुत ही अच्छे से अपनी वेबसाइट पे भी कवर किया है और कल इसको यूट्यूब पे भी अच्छे से बताया गया है। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज इंडिया यूएई होल्ड टॉक्स ऑन बायलैटरल टाइज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है इंडिया यूएई टाइज के बारे में और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी वेबसाइट पे इसको कवर किया गया है और लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें तो यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक, our next and last important headline is
G7 agrees to implement price cap on Russian oil। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल ग्रुपिंग सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है G7 के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अभी न्यूज में क्यों है? रिसेंटली G7 agreed to implement a price cap on oil exports from Russia। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? It is aimed at cutting off a source of funding for Moscow as its invasion of Ukraine continues, and it is also aimed to limit the impact of the war on global energy prices। अगर हम G7 को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है, लेकिन इसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 कंट्रीज दैट आर द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। कौन सी हैं वो? फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड जापान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते यही कहेंगे कि इन्वेस्ट इन योर ड्रीम, ग्रिंड नाउ शाइन लेटर। थैंक यू।